Hello guys, welcome back to my channel. This video is based on Indian Prime Minister Modi ji, who recently visited in Argentina on the third leg of Five Nation tour. Argentina is a federal country in south of the South American continent. So let's talk about the facts of Argentina and the PM visit, diplomacy and the foreign policy and strategy of India. So दिस इज द वर्ल्ड मैप। ये है हमारा प्यारा भारत और पीएम यहाँ पहुंचे हैं। पीएम अराइव्ड हियर इन ब्यूनोस एयरिस, द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बारे में कुछ जानते हैं। अर्जेंटीना इज साउथ एग्जिस्ट इन द साउथ ऑफ द साउथ अमेरिकन कंटिनेंट एंड द बॉर्डर countries is actually Chile, Bolivia, Paraguay, Brazil, Uruguay, and in the east, South Atlantic Ocean exist. So, the Argentina and Chile share a long boundary, and this long boundary is basically created by the Andes Mountains. So, Andes Mountains created natural boundary between the Chile and Argentina. Okay, guys, Argentina and Chile is mostly a cold country. Argentina is actually the large part of the Argentina exists in the temperate zone. So here is the climate is moderate and whole year the rain happens. So you should know about these two islands. That's the Falkland Islands, also called Malvinas Island, and this is South Georgia, South Sandwich Islands. Actually, the Argentina have border disputes with these two islands. Argentina still claims the sovereignty of these two islands, but the Falkland Islands is still controlled by the British. Actually, British जो है पहले यहाँ स्पेनिश का कब्जा हुआ करता था, फिर ब्रिटेन ने इसके कैपिटल सिटी पर कब्जा कर लिया, उसके बाद उन्होंने फॉकलैंड आइलैंड्स पर भी कब्जा कर लिया। फिर अर्जेंटीना के लोगों ने ब्यूनस एरिस को अंग्रेजों से छुड़ा लिया, बट उन्होंने फॉकलैंड आइलैंड्स पर उनका कंट्रोल नहीं हो पाया एंड द फॉकलैंड आइलैंड्स इज स्टेट इन डिस्प्यूट बिटवीन द यूके गवर्नमेंट एंड द अर्जेंटीना। अर्जेंटीना और चिली के बीच में भी एक बॉर्डर डिस्प्यूट है। एक्चुअली दिस इज द पैटागोनियन एरिया and the Patagonian area is controlled by both Chile and Argentina. This here is the South Patagonian ice field, and this ice field is the border dispute between between Chile and Argentina. So you should know another thing about this strait. You see here, this is the strait between the South Pacific Ocean and the South Atlantic Ocean, and this strait actually connects these both oceans, and this strait is actually connect the mainland of the South American continent and the archipelago exists here. This archipelago is named as Terra del Fuego, and the strait is named as, you see here, a Strait of Magellan. The strait is known as a Strait of Magellan. So you see clearly here the Strait of Magellan. So one thing is I should mention here is this is the southernmost tip of the Chile and also called the Argentina. Here is the southernmost tip of Argentina, and this is the passage. This passage is known as Drake Passage. Drake Passage exists between the southmost part of the southern American continent and the South Shetland Islands. This is South Shetland Islands. Actually, this islands is part of the Antarctica. So Argentina is also claims some part of Antarctica also. So this is the Drake Passage. You should know about that. And this here is the Southern Sea. This here is the South Atlantic Ocean, and this here is the South Pacific Ocean. So you know better about the Argentina. The PM arrived here to talk with the Argentina president for further security and energy strategies. So let's talk about more about the Argentina and the Prime Minister visit and the energy sources of the Argentina. So let's talk about and move forward, guys. I created a slide to know better and represent more information about this country and the PM visit. This is the Argentina.
I clearly mentioned that in the world map. This Grand Chaco, this is the grassland here, the Pampas, the grassland here, this is the Andes Mountains, this is the Chile, and this is Argentina, and this is the Patagonia area. This is the Patagonia area, and the South Patagonian ice field is just here. Okay, so let's talk about the government. Argentina is known as Argentina Republic. This is the federal republic form of government. It is the second largest country in the South America after Brazil. After Brazil, it is the second largest country in the South American continent. Argentina shares the bulk of the southern cone with Chile to the west and is also bordered by Bolivia and Paraguay in the north, Brazil in the northeast, Uruguay and South Atlantic Ocean in the east, and the Drake Passage in the south. Be clearly mentioned here in the world map. Argentina is a federal state subdivided into 23 provinces and one autonomous city, which is the federal capital and largest city of the nation, Buenos Aires. Their province and the capital have their own constituencies but exist under a federal system. So this federal system is different from the Indian federal system. Indian federal system is semi-federal, but this federal system is pure federal. It means that every federal state has its own constituencies and one autonomous city which is also federal capital, and the name is Buenos Aires. Actually, the autonomous city is basically the city where the federal or external influence of the government is less, and the city can govern its own power by his own people and can make rules and regulation for his own city. So this is the autonomous city and the name is Buenos Aires. So complete freedom and the constituencies for separate federal state exist here. So this is pure federal system. The Spanish in the past of the country, the Spanish arrived here in 16th century in 1516, that is 1516 में, and ruled the country for 300 years. In 1806, a British force overpowered a Spanish military in Buenos Aires and attacked the Falkland Islands, also called as Malvinas Islands. Local residents later recaptured the capital but never regained control of the Falklands. In 1816, Argentina claimed its independence. So पहले क्या था कि स्पेनिश का राज हुआ करता था यहाँ पर, उसके बाद ब्रिटिश फोर्स ने यहाँ पर आए और उन्होंने जो है इसके कैपिटल सिटी पर कब्जा कर लिया, उन्हें फाल्कलैंड आइलैंड्स पर भी कब्जा कर लिया, बट लेटर वहाँ के लोगों ने अपने कैपिटल पर फिर से कब्जा कर लिया, बट वो फाल्कलैंड आइलैंड्स पर अपना अधिपत्य नहीं जमा पाए. इस वजह से फाल्कलैंड आइलैंड्स इज स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूके गवर्नमेंट एंड अर्जेंटीना स्टिल claims sovereignty over the Falkland Islands, South Georgia and the South Sandwich Island, the Southern Patagonian ice field and a part of the Antarctica. So Southern Patagonian ice field is also a border dispute between Chile and Argentina. Argentina also claims some part of Antarctica as a part of their country. So this is the border disputes of the Argentina. To the east of the Andes, the interior of the country is flat, that is fertile grassland, that is the Pampas, fertile grassland. This area is called Pampas, is the agriculture heartland of the Argentina. This agriculture heartland because this is the grassland, mostly this is a very big grassland, so the agriculture is more developed here. The Green Chaco grassland is a vast semi-arid lowland region. Green Chaco grassland is the northern part of the Argentina, is here, just here, and the Green Chaco grassland basically extends to Bolivia, Peru, Paraguay and Brazil. So this is the vast semi-arid lowland region. This is also named a grassland. Unlike many other South American countries such as Peru and Ecuador, Argentina has fewer native people and a large population of people who came from Europe. In fact, 95% of Argentinian population are of European descent, mostly from Italy से आए हुए लोग हैं, स्पेन से और जर्मनी से यहाँ पर आके बस गए. Nearly half of the population lived in the area around Buenos Aires. So आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ के नेटिव people जो हैं वो बहुत कम है, वो बहुत कम एग्जिस्ट भी करते हैं, और यहाँ बाहर से वेस्टर्न नेशन से करके लोग यहाँ पर बस गए. जैसे 300 साल तक तो यहाँ स्पेन का कब्जा रहा था, उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिशर्स आ गए, उसके यहाँ पर फ्रेंच भी आए होंगे. सो
बेसिकली 95% पीपल ऑफ अर्जेंटीना पॉपुलेशन वो यूरोपियन डिसेंट के हैं, और यहाँ पर पंपास और यहाँ पर जो उनकी कैपिटल सिटी है ब्यूनस एरिस, यहाँ पर लगभग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड अराउंड द ब्यूनस एरिस, बिकॉज यहाँ एग्रीकल्चर की पूर्ण व्यवस्था है यहाँ पे। दिस ब्यूटीफुल सिटी दैट इज ब्यूनस एरिस, दैट इज यूरोपियन डिसेंट का ही यहाँ पर आपको मकान देखने को मिलेगा, हर तरह की चीजें आपको यूरोप जैसी ही देखने को मिलेगी। सो दिस ब्यूटीफुल सिटी दैट इज द ब्यूनस एरिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिस of South America because of its European influences. So you should know that Paris of the South America is known as Buenos Aires, that is the capital of Argentina. ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो स्पेनिश है, इंग्लिश है, इटालियन बोली जाती है, जर्मन और फ्रेंच, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। Argentina have rich natural resources including oil, silver and copper. Argentina main industry is agriculture. So agriculture पर based industry है, और अर्जेंटीना में natural resources की भरमार है actually. So combine these two sectors for 55% of the total industrial population का इन दोनों sectors से ही production होता है। So overall the fact is Argentina is important for its diverse culture के लिए, stunning natural landscapes के लिए and significant agriculture and energy resources के लिए अर्जेंटीना जो है जाना जाता है। The first bilateral visit by an Indian Prime Minister to Argentina in 57 years, nearly about 5 centuries after the first bilateral visit by the Indian Prime Minister. Actually, the PM Modi, who reached Buenos Aires, was accorded a ceremonial welcome upon his arrival at the Ezeiza International Airport. It is the PM Modi's second visit to the country as Prime Minister. He had visited in 2018 for the G20 summit. तो G20 summit के लिए वो दोनों मिले थे 2018 में, लेकिन वो समिट तो G20 के लिए था, लेकिन एक बायलैटरल समिट होती है जब एक प्राइम मिनिस्टर जो है एक दूसरे देश से अच्छे संबंध बनाने के लिए एक स्ट्रेटजी के साथ, एक विजन के साथ आते हैं। सो बायलैटरल जो विजिट है वो 57 साल के बाद अब जाकर के हुई है। During the visit, Modi talks with the President Milei to further boost India-Argentina partnership in key areas including defense, agriculture, mining, oil and gas, renewable energy, trade and investment. Okay guys, the Prime Minister said that Argentina was a key economic partner in Latin America and a close collaborator in the G20. Actually G20 में इनका योगदान बहुत ज़्यादा है और इकोनॉमिक पार्टनर भी हैं लैटिन अमेरिका के, क्योंकि इनके पास रिसोर्स रिच कंट्री है, रिसोर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। सो नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहा हूँ। पीएम मोदी pays homage to the Rabindranath Tagore in Argentina on final day of his trip to Argentina. India's eyes is on Argentina's shale reserves, lithium for energy security. These two, the shale oil and gas reserves and lithium, this two is important, and India's eyes is on these reserves. Argentina holds the world's second largest shale gas reserves and fourth largest shale oil reserves. It is also significant conventional oil and gas deposits, positioning it as a potential long-term energy partner for India. So this is very important energy partner in the South American countries because इन इंडिया को हमेशा जो है एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स की जो है वो दिक्कत रहती है, और क्रिटिकल मिनरल्स पर अभी तक भारत जो है 100% इंपोर्ट पर निर्भर है। सो इस दृष्टिकोण से देखे, इस आउटलुक से देखे, देन द Argentina is very important defense and security and energy strategies of India. So further, the country is also rich in critical minerals such as lithium, copper and rare earth elements. These are important for India's plans for clean energy and industrial growth. Along with Bolivia and Chile, Argentina is part of the lithium triangle. So you should know and you should remember that Bolivia, Chile and Argentina, these three countries is very rich in lithium. So these three countries is basically known as a part of lithium triangle, a region that holds a large share of world lithium reserves. Lithium plays a central role in rechargeable batteries, which are used in electric vehicles, mobile phones, laptops and systems that store renewable energy. So you should know the importance of the lithium is India to push preferential trade deal with Mercosur bloc. PM Modi requests Argentina support in expanding India-Mercosur
preferential trade agreement. Actually, Mercosur bloc is actually a Mercosur trade bloc. It is the South Common Market. This is the South Common Market in which its members are Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay, and Uruguay. This is the South American continent's countries, and they make a common market, that is the Southern Common Market. And this market have given certain preferences, such like India Mercosur Preferential Trade Agreement (PTA) is a trade agreement entered into force in 2009, fully and partially eliminating import tariff for most energy products and technologies. So import करने में, जैसे इंडिया को कुछ भी अगर import करना होता है energy से related products and technologies, तो वहाँ पर import का जो tariff है उसको कम कर दिया जाता है if India is a part of Mercosur agreement. So India and Mercosur Preferential Trade Agreement is already entered into force in 2019, but India wants to push further to sophisticate, to elongate the preferential trade agreement between India and Mercosur trading bloc, which includes Brazil, Argentina, Uruguay, and Paraguay. The PTA was established to promote trade expansion by granting reciprocal tariff preferences with the goal of eventually forming a free trade area. So this PTA is established to promote trade expansion by granting reciprocal tariff preferences. Reciprocal tariff is basically very famous because Mr. Trump is known as a reciprocal tariff promoter, because reciprocal tariff which works as a tit for tat system, मतलब जैसे को तैसा. Suppose if you want to export some products to another country takes some tariff on that imports, and if this country is export some products to this country, then this country is also impose tariffs that the former country takes on his products. So this tit for tat, जैसे को तैसा, मतलब एक देश जब दूसरे देश को कोई सामान बेचता है और जो भी टैरिफ लगता है उसके हिसाब से वो देश फिर अपने देश में जो प्रोडक्ट्स वो भेजता है उस पर वो उतना ही टैरिफ लगाता है. This reciprocal tariff system is basically stabilizing the business between two countries. So about the energy reserves of Argentina, you should know about that because this is important, and this makes the importance of Argentina in front of the India and the South-South cooperation of India. So Argentina is part of the lithium triangle along with Chile and Bolivia, with more than half of the world's total lithium reserves and having the distinction of having second largest lithium resources, third largest lithium reserves, and fourth largest production in the world. एक्चुअली लिथियम के यहाँ रिजर्व्स हैं, रिसोर्स हैं, बट उनको एक्सट्रैक्ट करना, फिर एक्सट्रैक्ट करके फिर वर्ल्ड के बाजारों में बेचना, उसमें इनका जो है चौथा स्थान होता है. तो आप जान सकते हो कि अर्जेंटीना जो है कितना बड़ा लिथियम का रिजर्व है, और लिथियम का रिजर्व चिली और बोलिविया में है. इन तीनों को अगर मिला जाए तो मोर देन हाफ ऑफ द lithium reserve is basically exist in the lithium triangle. Argentina currently holds 20% of global reserves, with most brine deposits located in and around the tri-border area with Bolivia and Chile. Argentina lithium carbonate production capacity has also tripled in the last 2 years. Argentina and India have signed an MOU to enhance cooperation in lithium exploration and mining investment. This partnership aims to strengthen resource security and expand opportunities for Indian companies in Argentina. So, India और Argentina के बीच में MOU भी साइन हो चुका है फॉर द लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन्वेस्टमेंट के लिए. ये इंडिया के जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है टू एक्सपैंड एंड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी एंड द एनर्जी सोर्सेस इन अर्जेंटीना. सो आप देख सकते हैं गाइज, द लिथियम रिजर्व्स जो है, लिथियम ट्रायंगल जो है वो कहाँ पर है? ये पूरी तरह से यहाँ पर है बोलिविया, अर्जेंटीना एंड चिली. ये पूरी तरह से जो है वो एंडीज का इलाका है, दैट इज पहाड़ी इलाका है, बहुत ही पुराना पहाड़ है, और वहीं पर लिथियम के रिजर्व्स जो है भरे पड़े हैं, ये चिली में, बोलिविया में और अर्जेंटीना में. तो यहाँ पर जो एरिया है इसको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल.
Okay guys, India remains largely import dependent for these minerals के लिए and their compounds के लिए with 100% import reliance for minerals like lithium, cobalt and nickel. So India is vulnerable भी है और scarcity है these resources की, और अभी तक इंडिया में अगर रिसोर्स है भी तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है, एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। अभी तक इंडिया 100% import reliance पर import पर निर्भर है for minerals like lithium, cobalt and nickel. Lithium carbonate is a versatile compound widely used across various industries. Its primary application is the production of lithium-ion batteries बनाने में, electric vehicles के लिए, portable electronics, energy storage systems के लिए. Beyond battery, it is also crucial component in ceramics and glass के manufacturing में काम आता है, where it enhances material strength, durability, and lower smelting temperatures. Additionally, lithium carbonate is used as a medicine also to treat mood disorders like bipolar disorders. So it's also a medicine. Argentina has significant shale gas and oil resources हैं यहाँ पर, particularly in the Vaca Muerta formation, which is one of the largest in the world. So आप देख सकते हैं Vaca Muerta जो है यहाँ पर है, आप देख सकते हैं पेटागोनिया एरिया में, ये एक रॉकी माउंटेन है, रॉकी चट्टान है यहाँ पर बहुत ज्यादा, और यहीं पर जो है सेल चट्टान है बेसिकली। इसके नीचे जो है यहाँ पर जो भी रॉकी माउंटेन है उसके नीचे सेल चट्टान है, और वहाँ पर गैस और ऑयल की रिजर्व्स हैं। एक्चुअली जो सेल चट्टान होती है, सेल जो होता है जिसको शेल बोलते हैं, वो रॉक जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है और वो सेडिमेंट्री रॉक की तरह काम करता है, जो जमीन के अंदर जो है वो दब जाते हैं और वो उनके अंदर फ्रैक्चर्स होते हैं, फीसर्स होते हैं, और उसमें गैस और जो ऑयल है जो भरे पड़े रहते हैं, तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये एक अनकन्वेंशनल, एक कह सकते हैं नेचुरल गैस, सेल गैस है, दैट इज फाउंड ट्रैप्ड विद इन सेल फॉर्मेशन। सेल इज द फाइन ग्राइंडेड सेडिमेंट्री रॉक। Shale oil is a type of petroleum होता है that is extracted from shale rock formation से, either by heating the shale to release the oil in case of oil shale, or by using hydraulic fracking to extract it from the shale deposits. It is considered an unconventional source of oil. So you see that the fracking for fuel का आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये देखिए पूरा सेटअप किया हुआ है। ये एक पाइप जो है ये सेल की चट्टान है, और ये पाइप जो है सेल की चट्टान पर यहाँ पर जो है इंजेक्ट किया गया है, और ये सेल की जो फीचर्स हैं ये देखें, ये टुकड़े हैं, ये एक तरह से फीचर्स इस चीज को कहा जाता है। तो इस फीचर्स में होता ये है कि हाई प्रेशर फ्रैक्चरिंग एक फ्लूइड होता है, स्पेशल टाइप के फ्लूइड, वो इसमें इंजेक्ट किया जाता है। तो इंजेक्शन के बाद गैस फ्लोज फ्रॉम द फ्रैक्चर्स इनटू द पाइप। तो अगर लिक्विड इसके अंदर भरेगा तो इसके अंदर की जो हवा है, जो ऑयल, जो गैस है एक्चुअली, वो गैस यहाँ से जो है ये वापस निकलता है, और वापस निकलने से हाई प्रेशर फ्रैक्चरिंग फ्लूइड ओपन्स नेटवर्क्स ऑफ फ्रैक्चर्स इन द शेल एंड सैंड प्रोब्स द फ्रैक्चर्स ओपन। सो फ्रैक्चर्स को ओपन कर दिया जाता है और यहाँ से गैस और ऑयल जो है यहीं पर से एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो मीथेन गैस एस्केप ड्यूरिंग द माइनिंग प्रोसेस। सो दिस इज टोटली अ माइनिंग प्रोसेस, हाउ द माइनिंग प्रोसेस इज conducted here, and the fracturing process is how this is happening. So this is all about the Argentina oil and shale gas reserves and the energy reserves. So thank you guys, this is all about the visit and all about the Argentina and Argentina critical resources. In the next video I shall discuss about the BRICS and the PM visit in Brazil to attend the BRICS summit. If you like this video, share this video with your friends and family, and don't forget to subscribe this channel. Thank you guys. Namaste. Thank you.